हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। एज यू नो कि अराउंड 20-22 डेज बाकी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। टू टेल यू अ स्टोरी कि व्हाट इज द रियल कंपटीशन। द रियल कंपटीशन इज नॉट 10 लाख लोग जो फॉर्म भर रहे हैं या उसमें से 4.5 लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, वो कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आई कंसिडर इज ओनली बिटवीन 50,000 स्टूडेंट्स, क्योंकि यही 50,000 स्टूडेंट्स है जिनको सही में पता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने बार रिवाइज करना है, कितने टेस्ट देने हैं। एंड यही स्टूडेंट्स है जिसके पास राइट मेंटरशिप है, राइट गाइडेंस है कि हाँ इसी तरीके से पढ़ना है, एग्जाम डे स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टिवली इफ यू कंसिडर कि 50,000 लोगों में ही कंपटीशन है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है, सबके लिए एग्जाम सेम है। The problem with prelims is unpredictability. It is not a tough exam, but unpredictability is the major factor जिसके वजह से it becomes a tough examination. And the good thing about examination, it is unpredictable for everyone. The major point which I wanted to highlight is you have to be confident about your preparation. अगर आप confident नहीं है आपके preparation में, तो it is a big issue. It is a big issue. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड दे आर स्कोरिंग 80, 85, 90, 95, 100 के यही रेंज में है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन इज टोटली डिफरेंट। इट इज यू शुड नॉट जज योर प्रिपरेशन, योर हार्ड वर्क बेस्ड ऑन दीज मॉक टेस्ट। आई वुड लाइक टू टेल यू कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, बट डू नॉट जज योर परफॉर्मेंस। यूपीएससी का पेपर अलग ही होता है एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि कोई भी मॉक टेस्ट कैन नॉट मैच द यूपीएससी स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली क्या होता है, दीज टेस्ट आर जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस। एग्जाम डे परफॉर्मेंस के लिए आपको रेडी करता है, बट यू शुड नॉट जज योर परफॉर्मेंस। There is so much variability between the mock test you are giving and the actual examination. So do not worry. I used to score 50 my marks, 60 marks, 70 marks during my mock test. Still I could score more than 130, 140 in my GS1 prelims paper. तो ये mock test पर आपका performance जज मत कीजिए। Make sure you give test. एग्जाम डे में जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो वो कम करने के लिए दीजिए। आपका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि यूपीएससी का पेपर टोटली डिफरेंट आने वाला है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज जो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट 20 डेज प्रिपेयर करेगा वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाएंगे। नाउ लास्ट 20 डेज में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गिव अप करते हैं, प्रेशर बिल्डअप होता है, ऐसा लगता है कि याद नहीं आएगा, लेकिन ये सबके साथ फिनोमेना है। एंड इवन ड्यूरिंग माय 6th अटेम्प्ट आई फेल्ट द सेम थिंग। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये फीलिंग आ रही है, आपको टेंशन आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, तो इट इज अ नॉर्मल फिनोमेना दैट शोज दैट यू आर अ सीरियस स्टूडेंट। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन नॉट सिट डाउन विद दिस प्रेशर, बट आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली। नाउ डू नॉट पुश योरसेल्फ इनटू रीडिंग न्यू सब्जेक्ट्स और कुछ नया मटेरियल जो ऑलरेडी है उसी को रिवाइज कीजिए एंड टेल योर माइंड दैट इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज आई हैव ट्राइड टू टेल यू दैट द पेपर, कंसिडर दैट पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। पैनिक कब होते हो कि आपको लगता है कि आपने जो पढ़ा है वही आने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि आप पैनिक हो जाते हो। बट कंसिडर कि यूपीएससी पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो ये माइंडसेट बना के जाइए। अगर डिफिकल्ट आए तो यू आर रेडी, यू डू नॉट पैनिक। आपको क्या करना है, उसमें भी सिंपल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, उसको पहले हिट करना है। जब डिफिकल्ट पेपर आएगा तो यू वुड बी रेडी टू हैंडल इट, यू वुड नॉट गोइंग टू पैनिक। एंड लकीली अगर पेपर इजी आता है, इट इज अ बून फॉर यू। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि कंसिडर, दिमाग में आज से ही बैठा लीजिए कि पेपर डिफिकल्ट है, ये पेपर डिफिकल्ट सबके लिए है। ऐसे मत समझिए कि सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने 1 साल कंसिस्टेंटली प्रिपेयर किया है एंड अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, तो पेपर इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। 30 to 35 क्वेश्चन मैक्स ही किसी को आते हैं, ये दिमाग में आप फिट कीजिए। आप ये मत समझिए कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस आने ही चाहिए या आपको पता चाहिए। ऑन द स्पॉट आंसर निकालना ही है, इसके लिए रेडी रहिए। तो मैं यही बोलूंगा, ऑन द स्पॉट आंसर निकालने के लिए योर ब्रेन शुड बी रेडी, योर शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सेकेंडली, जितना टफ क्वेश्चन है उतने ऑप्शंस इजी रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन टफ है ना, तो ऑप्शंस देखिए, यू वुड फाइंड इट इजी, यू वुड बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू टेल यू ड्यूरिंग दिस लास्ट 20-25 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉम्पिटिशन इज ओनली बिटवीन 50,000 स्टूडेंट्स, इट इज नॉट बिटवीन 4.5 लाख स्टूडेंट्स। ये कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉम्पिटिशन इज आपको 50,000 में से फर्स्ट 10,000 में आना है, यही सोचिए। यू आर द मोस्ट सीरियस स्टूडेंट्स। अगर आपने बेसिक प्रिपरेशन किया है, रिवीजन किया है, एडुकेट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए हैं, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी मेंटली स्टेबल ड्यूरिंग दिस 20-25 days. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मेक श्योर यू वॉच 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो जब भी आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, सो दैट यू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड यू दीज वीडियोज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो मेजरली इस पीरियड में ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, नॉट आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू टेल यू। चलेगा, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल,
Make sure you watch 100 most important topics for polity and environment, and so that it gives you confidence. Thank you. To continue with it, सबसे important आपको पता चाहिए National Dolphin Research Center, which is going to be set up in Patna. IUCN status of gangetic dolphin is endangered and it is National Aquatic Animal of India. Already हमने सब discuss कर लिया है. Secondly, we are also setting up first dolphin observatory, and this observatory would be set up at Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary. This is also in Bihar, तो ये भी आपको पता चाहिए Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary बिहार में है. वहीं dolphin observatory हम बना रहे हैं, तो ये एक important news था. With respect to dolphins, riverine dolphins, there are 3 types जो इंडिया में मिलते हैं. First is Gangetic dolphins, उसका IUCN status is endangered and they are found in majorly in Ganga region, तो ये एक important चीज़ पता चाहिए. Next is Indus water dolphins. These are found in Indus river, again endangered. Indus and Bias river में मिलते हैं, तो ये आपको पता चाहिए. Next is Irrawaddy dolphins. These are also endangered. These are found in Chilka Lake, Mekong River, and they are found in majorly in brackish water. Brackish water में मिलते हैं, तो एक important चीज़ आपको पता चाहिए with respect to Irrawaddy, Indus water and Gangetic dolphins. तो सब कुछ आपको पता चाहिए. Next important thing is Project Dolphin. Already हमने dolphins cover किए थे, and Project Dolphin is an important initiative which was recently launched last year. And the aim of this Project Dolphin is not just to protect riverine dolphins but also ocean dolphin. And the focus is to involve fishermen, and the primary focus of this Project Dolphin is to protect Gangetic dolphin. तो ये आपको पता चाहिए. And we are trying to involve fishermen in the protection of dolphins. And it also focuses on use of modern technology while protecting Gangetic dolphins, and it involves not just protecting the dolphins but also protecting the aquatic habitat. ये भी एक important चीज़ आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, जैसे हमने विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी देखी, अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन बिहार इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता चाहिए. फर्स्ट इज भिम्बर्ड सेंचुरी आपको पता चाहिए, राजगीर सेंचुरी अनदर इंपॉर्टेंट सेंचुरी इन बिहार, कैमूर सेंचुरी, कन्वर झील बर्ड सेंचुरी अगेन इन बिहार, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन हमने ऑलरेडी देखा, गौतम बुद्ध सेंचुरी इन बिहार, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऑल्सो प्रेजेंट इन बिहार. तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज आर पार्ट ऑफ बिहार. तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज आपको आ सकता है क्वेश्चन. तो मेक श्योर यू ऐड टू योर पॉइंट्स, एंड ये नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो यू मेक श्योर यू ऐड टू योर नोट्स एंड नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, रिसेंटली फिट फॉर 55 पैकेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, फिट फॉर 55 पैकेज, एंड दिस वॉज अ इनिशिएटिव ऑफ EU, एंड थ्रू दिस फिट फॉर 55 पैकेज व्हाट दे हैव डन इज दे हैव रिन्यूड their INDC, that is Intended National Determined Contribution. All the EU countries have increased their contribution with respect to climate change and what steps they are going to take. So they have renewed their INDC and they have taken additional steps to tackle climate change. तो ये आपको पता चाहिए. And this Fit for 55 package is part of Paris Agreement. They are trying to adhere to Paris Agreement and have renewed their INDC. तो इतना जानना more than enough है. Next, another important news with respect to hydrogen, already hydrogen is in news, is International Renewable Energy Agency. It's an important agency which we have already discussed previously in our lectures, तो ये आपको पता चाहिए. And this agency has brought out a report and it said कि the use of hydrogen as a fuel would increase in recent times, and use of hydrogen is going to increase in recent times. And the reason for use of hydrogen, it's a clean form of energy which does not cause pollution also, it does not cause climate change also. So hydrogen is an important initiative, it's an important fuel. But the problem with respect to hydrogen, it is very difficult to transport hydrogen, and secondly it is very volatile and it is combustible. So that is the issue with respect to hydrogen. And it is said कि 12% of total energy by 2050 would be through hydrogen. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए. जब भी हम हाइड्रोजन की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जो आपको पता चाहिए. फर्स्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी. सो द जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन through renewable energy, that type of hydrogen is known as green hydrogen. Then there is blue hydrogen, where the generation of hydrogen is through fossil fuel or through conventional energy, but simultaneously जो energy generate हो रही है, जो भी CO2 release हो रहा है in production of blue hydrogen,
that CO2 is again captured. So there is carbon capture technology used along with generation of hydrogen. So we are using fuel or we are using any fossil fuel for generation of hydrogen, and जो fossil fuel use हो रहा है उसके वजह से जो CO2 release हो रहा है, we are again capturing it. So if such type of hydrogen is generated, that is known as blue hydrogen, and gray hydrogen is a hydrogen which is generated from fossil fuel and which causes climate change. So CO2 emission हो रहा है in the process of generation of hydrogen, that is gray hydrogen. तो ये आपको पता चाहिए. Next is this report also said कि इंडिया का जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है एंड डिमांड है प्रेजेंटली 6 मिलियन टन्स है, एंड इट वुड इंक्रीज टू 28 मिलियन टन्स बाय 2050. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. साइड बाय साइड इंडिया ने हाइड्रोजन एनर्जी मिशन हैज आल्सो बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस ईयर्स बजट आल्सो said कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is giving financial assistance for this project, that is hydrogen energy mission, and the focus of this mission is generation of hydrogen from green sources. So what we are trying to generate is we are trying to promote research and development in the field of generation of hydrogen through green resources, that is through renewable energy, and this type of hydrogen would be known as green hydrogen. तो ये आपको पता चाहिए. So this mission aims at promoting R&D and execution of projects which promotes green hydrogen. तो ये आपको पता चाहिए. Next, as you have seen that number of heat waves across the country has increased, and at the global level also. In Canada you might have seen the temperature has gone up to 50 degrees, and one of the phenomena which was seen in Canada was formation of heat dome. तो basically heat dome क्या है? It's when an atmosphere traps the hot oceanic air like a cap. So जो भी hot ocean air है, it cannot rise up, and there is जो atmospheric pressure है, atmospheric pressure की वजह से this hot air cannot rise, and this hot air again comes back because of this atmospheric pressure which is present above the air, and this phenomena further leads to huge increase of temperature. As the temperature increases, the air rises, but there are situations such as La Nina which does not allow the air to rise, and the air again comes back because of atmospheric pressure and leads to formation of dome. So this is known as heat dome, and this higher atmospheric pressure act as a dome. तो ये आपको पता चाहिए. And this situation arises when there is strong atmospheric pressure with La Nina as a phenomena. तब ये important phenomena होता है heat dome. This can be seen through this image where you can see that as the temperature rises, the air rises, but because of this high pressure, this hot air is again pushed down, leading to formation of dome, and this condition rises when there is high pressure and phenomena such as La Nina. तो ये एक important चीज याद कीजिए, and this is a kind of dome which is formed and which leads to rapid rise and huge rise of temperature. तो ये आपको पता चाहिए. Whenever we are looking at high temperature, you should know about definition of heat wave. Heat wave is considered when the temperature rises more than 30 degrees in hills and more than 40 degrees in plains. जब इतना temperature rise, इससे ज़्यादा temperature होगा, then only heat wave is considered. So if the normal temperature is less than 40 degrees in any area, and if the temperature rises more than 5 or 6 degrees suddenly within 1 or 2 days, then it is called as heat wave, and if it rises more than 7 days, it is called as severe heat wave. तो ये आपको पता चाहिए. When the temperature is more than 40 degrees in that area, any rise of 4 to 5 degrees is known as heat wave. A temperature more than 6 degrees Celsius is known as severe heat wave. तो ये आपको पता चाहिए. And any temperature rise more than 45 degree irrespective of the place, अगर उस place में normal temperature भी 43 है लेकिन 45 से ज़्यादा हो गया temperature, it would be called as heat wave. तो ये एक important definition with respect to heat wave आपको पता चाहिए. Moving forward, आपको और एक important coalition के बारे में पता चाहिए, that is leaf coalition, which is in news, and the aim of this leaf coalition is lowering emission by accelerating forest finance. The aim of this initiative is to accelerate forest finance or accelerate finance towards forest protection, and it was launched at an important summit, that is Leader Summit on Climate Change 2021, which was hosted by USA. During that summit, this important initiative was started, that was LEAF initiative, that is lowering emission by accelerating forest finance, and it is a PPP initiative to protect tropical forest and mobilize around $1 billion. तो tropical forest को protect करना, and through protection of forest we are trying to reduce emission
And this is a PPP initiative where private and public player are coming together to raise $1 billion to protect tropical forest. तो ये आपको पता चाहिए. Moving forward, आपको Leaders Summit on Climate के बारे में पता चाहिए. It's an important initiative or conference which was hosted by United States on Earth Day. Earth Day was on 22nd April. 22nd April था, तब we had this Leaders Summit on Climate, and its summit coincides with 5th anniversary of opening of Paris Agreement. तो 5th anniversary of opening of Paris Agreement के साथ coincidence था. And this initiative is also a precursor to United Nation Conference COP26 जो ग्लासगो में this year होने वाला है. It's a precursor for this, and this summit highlighted the role of technology innovation in achieving net zero or climate resilient economy. So importance of technological innovation. Secondly, it also highlights the broad economic benefits of climate action with strong focus on job creation. So if we protect climate, it would indirectly promote economic growth and promote job creation. तो ये भी इसमें highlight किया गया था. तो ये आपको पता चाहिए. Leader Summit on Climate was an initiative of US President, because before Joe Biden President Trump withdraw USA from Paris Agreement, लेकिन now Joe Biden has again entered into this Paris Agreement, and to promote US commitment and leaders commitment to this climate change and US commitment, they have started this summit. तो ये आपको पता चाहिए. As I said कि Leader Summit was on Earth Day, and it was on 22nd April, and the theme of this year's Earth Day was an important चीज जो आपको पता चाहिए. Restore our Earth एक important theme था, and basically it is trying to increase public awareness with respect to protection of our earth environment, earth climate, biodiversity, उसको protect करने के लिए important था. And this Earth Day is celebrated and coordinated by Earth Day organization. तो ये भी एक important चीज आपको पता चाहिए with respect to Earth Day. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अर्थ आवर, अर्थ ओवरशूट डे, ये दो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स से. मेक श्योर यू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स एंड ऐड टू योर नोट्स, ऐड एवरी पॉइंट टू योर नोट्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, you should know about last ice area, which is a part of Arctic region, and it was seen that this last ice area is melting earlier than expected, and this is an important part of Arctic region, but it is melting at a faster rate. It was in news because of that reason. तो last ice area कहाँ है? Arctic region में, and it is melting at a faster rate. Next important और एक important आपको चीज़ पता चाहिए, that is A76 आपको iceberg पता चाहिए. It is the largest iceberg which was recently carved out of Antarctica. Antarctica का एक major part क्या हो गया? टूट गया, and it was now a iceberg. So it is one of the largest iceberg. A76 is now the largest iceberg, and it was carved out because of climate change and melting of ice. तो ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए. ये एंटार्क्टिका में है, तो ये एक important न्यूज़ आर्टिकल आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच यू शुड नो, विच इज ऑल्सो इन न्यूज. इट इज अ पॉइंट दैट लीड्स टू लार्ज चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. So beyond that, there is complete change in the climatic system of any region. So it is a tipping point. After that, till now the climatic system is same, and beyond that there is a complete change in the climatic system. So this point is known as tipping point. So basically climate tipping point causes irreversible changes in climate system. It causes irreversible changes. So beyond this there won't be any reversible changes. Till this there would be reversible changes. तो यहाँ से क्या हो गया? Complete irreversible changes in the climate system. And it was said कि the climate tipping point है for Antarctica. The Antarctica पूरा climate would be completely changed irreversibly by 2060 because of this faster climate change. तो ये आपको पता चाहिए. Next is one more definition which was in news is ocean rewilding. It's an important concept which would come up in COP26 जो ग्लासगो में होने वाला है, वहाँ एक concept आएगा. तो you should know about this ocean rewilding. And the aim of this ocean rewilding program is to reintroducing plants and animals in the ocean and allowing them to grow without human interference. So basically what it aims to do is we are trying to introduce plants and animals in the ocean and trying to grow them, and these are the natural habitats of that area but were washed out because of climate change or because of invasive species. We are trying to reintroduce them and allowing them to grow without human interference. So this concept is known as ocean rewilding. तो ये आपको पता चाहिए, and it was supported by EU, and this concept as I said would come up in COP26. तो ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए.
Moving forward, you should know about an important animal which is also in news, that is pygmy hawk. It is one of the smallest pig which is found in northeast region, and it is an indicator species. As you are part of our environment module also, you should know about what do you understand by indicator species. Secondly, you should also know that its IUCN status is critically endangered, तो एक important चीज़ आपको पता चाहिए, and majorly found in wet grasslands में ये found मिलता है, तो you should know about this. Next is an important program, that is pygmy hawk conservation program, was launched by Assam Forest Department along with IUCN and Dural Wildlife Conservation. तो ये एक important program आपको पता चाहिए, that is pygmy hawk conservation program. Moving forward, आपको एक important report के बारे में पता चाहिए, that is a nature for all, the need for human wildlife coexistence, and this report is published by WWF and UNEP. Already both these organizations we have covered comprehensively in our previous lectures, so make sure you watch this. And this report says that human elephant conflicts have increased recently, and in India there were 500 deaths of elephant and 2,361 people died because of human elephant conflict from 2014 to 2019. तो in last 5 to 6 years इतने deaths हुए हैं, तो there is rising conflicts, and this was presented in this report, that is a nature for all. Next is जब भी हम human elephant conflict की बात करते हैं, तो you should know about important project, that is project Rehab. It's an important project that is reducing elephant human attack using bees. It was launched at 4 spots in Nagarhole National Park in Karnataka. The aim of this project is to prevent human elephant conflict without creating harm to either of them. So basically what we are using through this project is we are using bees, honey bees का use करते हैं, which is a threat, which is as honeybees are considered as threat by elephants also and human beings also. Because of this, so whenever elephant moves and there are honeybees boxes which are kept, so whenever they enter any specific area, they would hit this box and the bees would be out, and the elephant would consider them as threat and move back. So the chances of conflict between humans and elephant would decrease. तो ये आपको पता चाहिए, and these bee boxes are provided as a part of honey mission. तो ये आपको पता चाहिए, एक important चीज़ आपको पता चाहिए about project Rehab. Next, another important animal which is in news is Himalayan yak, which is majorly found in Jammu Kashmir, Ladakh region में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश में. इसका IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल. तो हिमालयन याक के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना मोर देन इनफ है. Next is, there was recent news that Department of Biotechnology took important initiative with respect to genome sequencing of a mangrove species, that is Avencia marina, which is found in India. तो उसका एक important genome sequencing किया, because this Avencia marina has high salt tolerant. These mangrove species are high salt tolerant and are secreting high salt secreting species. To study their genome, and if we can apply these salt secreting genes to another plants, तो वो स्टडी करने के लिए उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था. तो ये आपको पता चाहिए. विथ रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव्स, ये आपको पता चाहिए, दे अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 0.15% of our total land area in India, and recently there was increase of 54 square kilometers comparing to the last 2 years of mangroves plantation across India. So there was an increase of mangrove plantation by 54 square kilometers. तो ये आपको पता चाहिए. Next is there was a new species of gecko which was recently found in Odisha. तो ये आपको पता चाहिए. There is an important gecko, Indian golden gecko. ये आपको पता चाहिए. It's like a lizard, and इसका IUCN status least concerned है. मेजरली तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में ये मिलता है. तो इसका ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चाहिए. न्यू स्पीशीज वॉज फाउंड इन उड़ीसा. Next is, you should also know about an important garden which was set up, that is India's first cryptogamic garden. It was set up as Chakrata in Uttarakhand, and basically cryptogamic plants are those plants which reproduce through spores, and reproduction through spores or multiplication through spores is a way of asexual reproduction. तो ये आपको पता चाहिए. तो cryptogamic plants ही which were established at this cryptogamic gardens, and इसमें मेजरली फंगाई आता है, एंड अदर स्पोर्स बेरिंग प्लांट्स वेर प्लांटेड इन दिस क्रिप्टोगैमिक गार्डन. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज देयर वर वन मोर इंसिडेंट्स वेयर ब्लैक लेपर्ड वाज स्पॉटेड रिसेंटली इन नावगांव नागजारा टाइगर रिजर्व विच इज़ बेस्ड इन महाराष्ट्र. एंड जो ब्लैक लेपर्ड है इसको ब्लैक पैंथर भी बोलते हैं, बट इट इज़ अ लेपर्ड, इट इज़ अ मेलेनिस्टिक लेपर्ड. इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है. तो ये
आपको पता चाहिए. जस्ट दैट द कलर इज ब्लैक बट इट इज अ लेपर्ड, इट इज नॉट अ सेपरेट स्पीशीज. तो ये आपको पता चाहिए. इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है. नेक्स्ट इज द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट विच वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय MOEF, and it said कि the population of leopards in India is around 12,800 and there is a 60% increase compared to 2014 census, and the highest population is found in Madhya Pradesh followed by Karnataka and Maharashtra. तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, followed by Karnataka and Maharashtra, and its IUCN status already done is वल्नरेबल. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, रिसेंटली RBI हैज़ जॉइंड एन इंपॉर्टेंट नेटवर्क एंड द नेम ऑफ द नेटवर्क इज द नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम. सो बेसिकली RBI हैज़ जॉइंड दिस द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ 83 सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सुपरवाइजर दैट एम्स टू एक्सेलरेट the scaling up of green finance and develop recommendation for central banks role for climate change. So basically what this coalition or this network does is it increases the green finance. Green finance means it finances the project which leads to positive impact to climate change, positive impact to environment. तो ऐसे projects को ये finance करता है, तो इसको ग्रीन फाइनेंस बोलता है. तो थ्रू दिस नेटवर्क वी आर ट्राइंग टू एक्सेलरेट द ग्रीन फाइनेंस एंड डेवलप रिकमेंडेशंस फॉर सेंट्रल बैंक्स रोल फॉर क्लाइमेट चेंज. सो सेंट्रल बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो हैव अ रोल in climate change and to deal with climate change, and RBI has joined this, and this the network for greening of financial system, इसका headquarter is in Paris, France. तो ये आपको पता चाहिए. Next is we'll move to important points which were in news with respect to forest. तो ये आपको पता चाहिए. Next is आपको पता चाहिए United Nations Forum on Forest. It was established in 2000 by ECOSOC, that is Economic and Social Council of United Nations. ECOSOC an important organization of United Nations. उन्होंने establish किया था, and the objective of this United Nations Forum on Forest was to promote management and conservation and sustainable development of all types of forest and strengthen long-term political commitment to this end. So what we want to do is properly manage, conserve and sustainably develop forest, all types of forest, protect all type of forest and strengthen long-term political commitment to this end. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चाहिए, इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए बेस्ड इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट हैज़ यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड स्पेशलाइज एजेंसीज. तो ये उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, आपको नगर वन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पता चाहिए. इट एम्स टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट इन नेक्स्ट 5 years, and this would be maintained by state government, and this forest would be developed with people's participation, and it would be funded by CAMPA, that is compensatory afforestation जो अथॉरिटी है, दैट वुड बी फंडेड बाय दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो एक इंपॉर्टेंट पता चाहिए नगर वन स्कीम. हरित पथ ऐप भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, तो ये आपको पता चाहिए. इट फैसिलिटेट्स क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवेज अक्रॉस द कंट्री. तो जो भी ग्रीन हाईवेज है अलॉन्ग द हाईवेज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज बिल्ड trees and plant trees along the highways so that it reduces air pollution, it reduces noise pollution, and through this app what we would be able to do is monitor location and growth and maintenance activities of this green highways. तो green path, हरित पथ ऐप आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट, आपको पता चाहिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 विच वॉज रिलीज बाय FAO and UNEP. State of World Forest Report 2020, and it says 31% of global land is forest. 31% of global जितना भी हमारा land है is forest. तो State of World Forest Report, FAO also released an important report that is Global Forest Resource Assessment Report. तो ये अलग FAO रिलीज करता है, लेकिन State of World Forest Report is published by FAO and UNEP. You should know about this important initiative. Next is आपको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी पता चाहिए, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च. ऑलरेडी हमने इंटरनेशनल अर्थ डे देखा था. तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च, एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट. यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हमने देखा है, एंड FAO in collaboration with government, the collaborative partnership on forest and other relevant organization in the field. So it's celebrated by all the organization जो हमने देखा है, that is United Nation Forum on Forest, FAO हो गया with various government, and the collaborative partnership
ऑन फॉरेस्ट, ये सब इन्वॉल्व है 21 मार्च। एंड दिस ईयर्स द थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। एक इंपॉर्टेंट थीम था ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑन फॉरेस्ट। एंड दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो एम्स टू प्रमोट UN decade on ecosystem restoration. तो basically through protection of forest and conservation of forest, what we are trying to promote is UN decade on ecosystem restoration, which is between 2021 and 2030, which calls for protection and revival of the ecosystem. तो एक important है ecosystem restoration पर को focus करता है UN decade on ecosystem this year's UN decade. And ecosystem restoration aims at not just as conserving but also promoting sustainable development of the ecosystem, protecting ecosystem and conserving ecosystem, and trying to conserve new areas and trying to avoid degradation of the existing ecosystem. तो ये सारी चीज़ें promote करता है UN decade on ecosystem restoration. तो ये आपको पता चाहिए. Next is with respect to rising forest fire, you should know about an important initiative of Government of India, that is MOEF, that is Fire Alert System version 3.0. तो FAST 3.0 is an advanced version for early warning system with respect to forest fire. जब भी forest fire होता है, through this important system we get to know कि forest fire है, and Forest Survey of India, which is an body under MOEF, which manages this FAST system. तो ये आपको पता चाहिए, which gives an early warning with respect to forest fire, helps in monitoring the forest fire. तो FAST system आपको पता चाहिए, and the satellite through which the information which reaches the FAST system is SNPP VIIRS satellite है, जिसके through we are getting information with respect to forest fire. तो ये एक important satellite आपको पता चाहिए, SNPP VIIRS. Through this we are getting information with respect to forest fire, and Forest Alert System version 3.0 gets information from this satellite, and it is an important initiative which is managed by Forest Survey of India. तो ये एक important चीज़ पता चाहिए. Next is another report which already we have done is strengthening forest fire management in India. It's an important report by World Bank and MOEF, and almost 60% of India's districts are affected by forest fires. तो ये एक important report था, and they said कि 60% of India's districts are affected by forest fire, and between March and April there is maximum number of forest fires. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज आपको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में पता चाहिए. इट्स एन ओपन रिसोर्स वेब एप्लीकेशन टू मॉनिटर ग्लोबल फॉरेस्ट इन रियल टाइम. तो रियल टाइम में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मॉनिटर ऑल द फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट इज इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद गूगल, USAID एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, एंड विथ वेरियस नॉन प्रॉफिट एंड पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो इनका इनिशिएटिव है, ऑनलाइन वेब पोर्टल है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच. And according to this Global Forest Watch, there was doubling of forest fire alert in last few years, and this was captured through VIIRS satellite, जो already हमने FAST में देखा था. तो using this we came to know that the number of forest fire has increased in recent times, and it has doubled in recent times. Forest fire alert has increased 2 times. तो ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज आपको ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट पता चाहिए, विच इज रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट रिलीज करता है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट, एंड दिस रिपोर्ट इज द फर्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड स्टैंड इन इंप्लीमेंटिंग यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट. तो यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट कितना इंप्लीमेंट हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 था, वो कितना इंप्लीमेंट हुआ है, दैट इज इवैल्यूएटेड थ्रू दिस ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट. And this, what is this United Nations strategic प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-13 क्या है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चाहिए. इसको ही मॉनिटर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए ये ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट लाया गया था रिसेंटली, एंड दिस स्ट्रैटेजिक प्लान वाज अडॉप्टेड एट द स्पेशल सेशन ऑफ UN फोरम ऑन फॉरेस्ट विच वाज हेल्ड इन 2017, एंड द प्लान कंसिस्ट ऑफ 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स. तो इस जो फॉरेस्ट फोरम हुआ था, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट हुआ था, तब हमने 6 फॉरेस्ट गोल्स एस्टैब्लिश किए थे अलॉन्ग विद 26 एसोसिएटेड टारगेट्स विच हैज़ टू बी रीच्ड बाय 2030, एंड the final aim of this targets was to protect and was to increase 3% of worldwide forest by 2030, which would amounts to 120 million of hectares of forest. 120 million hectares of forest. So basically by 2030 what we need to do is increase forest cover by 3%. This was adopted at UN strategic plan for forest. एक important उन्होंने goals बनाए थे यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, उसके अंडर ये गोल था, एंड इसका ही इवैल्यूएशन करने के लिए ग्लोबल
ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट था, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज आपको एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पता चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रो फॉरेस्ट्री? बेसिकली इट इज डिफाइंड एज लैंड यूज सिस्टम विच इंटीग्रेट्स ट्रीज एंड श्रब्स ऑन फार्मलैंड एंड रूरल लैंडस्केप टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज इन एग्रीकल्चरल लैंड, इन रूरल लैंडस्केप व्हाट वी आर प्लांटिंग इज ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, सो दैट इट लीड्स टू एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री का जो आपको पता चाहिए। एंड टू प्रमोट दिस एग्रो फॉरेस्ट्री व्हाट वी हैव इज सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, एंड दिस सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री इज इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, एंड दिस सबमिशन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमने बैम्बू मिशन देखा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सबमिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दिस सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड दिस सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री encourages farmers to plant multi-purpose trees together with agricultural crops for climate resilience and also for additional income। तो एक important चीज़ था। and this schemes promote planting of endemic species of trees। तो endemic species of trees जो उस एरिया में common है उसको promote करता है। it does not promote exotic species। exotic species are which are not native to that area, these are exotic species, these are alien species, these are invasive species which are part of that ecosystem, but these are naturally not found। तो exotic species हम promote नहीं करेंगे, but endemic species हम promote करेंगे। तो ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड आपको वन मोर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में पता चाहिए, दैट इज द ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। इट्स एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN एंड यूनेस्को। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, एंड द मेन एम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इज टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज थ्रू रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। सो थ्रू यूज ऑफ कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। सो वी वांट टू यूज मरीन इकोलॉजी, blue economy to reduce climate change and to improve carbon sequestration। तो उस पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव दैट इज यूजिंग मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज बायोडीजल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडीजल, बिकॉज इट्स इन यूज फॉर वेरियस रीजन। सो बेसिकली इट्स अ डीजल फ्यूल डिराइव फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड ईस्टर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बायोडीजल? इट इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड ईस्टर्स होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, एंड दे आर फॉर्म थ्रू ट्रांसईस्टरिफिकेशन। तो ये एक प्रोसेस आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ बायोडीजल। जब भी हम बायोडीजल की बात करते हैं आपको रूको प्रोग्राम पता चाहिए, दैट इज रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल विच एम्स एट कन्वर्टिंग द रीयूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू बायोडीजल। तो एक इंपॉर्टेंट है, यूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू बायोडीजल कन्वर्ट करने के एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एंड इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज आपको E100 प्रोजेक्ट आपको पता चाहिए विच वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड द एम ऑफ दिस E100 प्रोजेक्ट इज सेटिंग अप ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल अक्रॉस इंडिया विच कुड बी यूज्ड फॉर एज अ फ्यूल। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस है सेटिंग अप अ नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल अक्रॉस इंडिया विच कुड बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो E100 एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंट हमारा इथेनॉल जो ब्लेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल, इट इज अराउंड 8.5%। E10 लेवल हमें 2022 तक अचीव करना है, E20 लेवल हमें 2023 to 25 तक हमें अचीव करना है। तो ये फिगर्स आपको पता चाहिए। अर्लियर दिस लेवल्स वेर अराउंड 2030, लेकिन हमने अभी क्या कर दिया है, हमने ये लेवल हमने आगे लेके आए हैं, एंड हमारे टारगेट्स वी हैव प्रीपोन्ड आवर टारगेट्स। तो प्रेजेंट टारगेट फॉर E20 दैट इज 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल इस बाय 2023-25 तक अचीव करना है। E10 बाय 2022 प्रेजेंट 8.5% आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज जब भी बायो इथेनॉल की बात करते हैं तो PM-G1 प्रोग्राम आपको पता चाहिए, प्रधानमंत्री J1 प्रोग्राम। द एम ऑफ दिस G1 प्रोग्राम इज सेटिंग अप ऑफ सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट्स एंड प्रोवाइडिंग देम सब्सिडीज एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड प्रोमोटिंग R&D विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग अप ऑफ सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को डेवलपमेंट पर ये फोकस करता है। एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज जब भी हम बायोडीजल की बात करते हैं, बायोफ्यूल की बात करते हैं, सी बकथॉर्न एक इंपॉर्टेंट श्रब है। सी बकथॉर्न इज नॉट अ
marine plant, but it's a shrub plant है, and it was earlier thought to be a very good source of biofuel, but presently its use is more for soil conservation, preventing soil erosion. It has also medicinal benefits such as heart and skin problem में it is very useful. Food industry में भी it has huge benefits. Next is you should know that it grows above tree line and in dry area में ये ज़्यादा grow होता है. हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में you can find this sea buckthorn above tree line. तो ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए. Next is red panda is also in news and IUCN status of red panda आपको पता चाहिए. It's endangered. सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में you can find red panda. Giant panda was also in news. इसका IUCN status is vulnerable, majorly found in चाइना में मिलता है. एंड WWF का जो लोगो है उसमें what you find is giant panda, तो you should know that about this.